Yo, what's going on, everyone? What's going on? Good afternoon. Everything is working fine. Yep, yep, it's going great. Right now, I'm at the dense forest of. I don't know where I was going with it. Anyways, it is 24th of March, and it's it's a Monday. It's the saddest day of the week, and I hope you had a productive day. I sure did not. Anyways, so let's just jump into it. Before that, let's see if there's any. Wait. Yeah, yo, Aryan. Yeah. So we would be not expensive stuff. We would be really project. What project? I don't know. The first things first. I have not changed this wallpaper for a long time. So let's change our wallpaper. Oh my God. Where should I? Yeah, whatever. No, we did not have a productive day because the AI project is pending. Srija, hi Srija, calm down. It would be done. Don't worry. Take a breather. We would put this as our wallpaper. Yeah. Oh, okay. It has music. I don't like music. Yeah, perfect. Oh, see, it saves the day. That is so nice. It works with the mouse. Anyways, we would be jumping right into the stream. But this is the first stream after 100 subscribers, so foggies to us. And we would see what are the news. But right at the bat, we know Kunal Kamra, a famous political comedian, if you like to call him that, has did some controversial jokes. Again, cool wallpaper. Thanks, man. And that resulted in really some horrific things. Let's read them out. BMC officials, I think Bombay Municipal Corporation, on Monday were seen arriving at Unicontinental Hotel at Mumbai, hammering hours after Shiv Sena workers have vandalized Habitat Studio. So, Srija says she's your 101 sub. That's crazy. Thank you. Honored. Uh, I don't know why. Does it still do that? I don't know what this is. I don't know. Does this still work? It's so weird. I don't know if it's working or not. Yeah, it's working. Great. Anyways, yeah. Uh, so what was I doing? Yeah. So in the video shared by a news agency, let's see this. What happened? I think that will give us context of what exactly happened because frankly, I don't know. What's happening, man? All right. So apparently he said something offensive that triggered a lot of buzz, and one political party or like one organization individual decided to really break the uh, place where he was doing comedy. I really don't understand the logic. Prosecute that person. If you are offended, go to the court, sue them for defamation. But why would you break the place where he did comedy? How does that work? I don't know. So that is it. I don't want to talk about this much more. Nishan Kishan celebrations were aimed at India's selector and Rohit Sharma. Okay, great. That's good.
I hope he gets an opportunity to play for the team. Whatever. That's good. He did really well. He played outstanding last day. Four big films releasing within a week. What are the four films releasing? What is this? This is like in 2026. Yeah, I don't care. I really don't know why did I filter these at the first place. Wow, I think that would be better audio. Okay, let's see. Caption is spelling error. What? What caption is spelling error? Oh, okay. All right. We have an error in our caption today. So, yeah, that's such a stupid error. Going. Thank you. That's so nice. So, let's see. What is the next news? Netflix is adolescence. Yeah, so this is the thing. Um, I have not heard about it, but I have been hearing some buzz amongst people, and then I checked the rankings last day of the most popular TV show right now. I was assuming it would be Severance, right? It was the biggest show in the television right now. It has to be the top one. No, it's Adolescence. Surprisingly, this is a limited series. I think it's a four-episode show. Let me see, let me see, let me see, let me see, let me see. Oh, I don't have Netflix here. I have to open my personal browser. Let me see. Uh, Adol. Yeah, yeah. It's a four-episode show, and it's roughly like basically a 4 hour movie watch. And it is supposed to be great. People are really loving it. Like it has outstanding. Um, what is that? Wow, I can't browse from here. That's crazy. Okay. This has amazing rating, like 98% Rotten Tomatoes. This is beloved. It is said to be one of the most tightest television shows ever made. Like really, like every minute matters. So I would be giving this a watch. I'm interested in watching this. Again, always appreciate good television. Unfortunately, coming from Netflix. I just, yeah, whatever. This is Adolescence. Then Severance is there, White Lotus is there. That was the news. Yeah. What is the next news? China reassures Apple, Pfizer, Cargill, other other of business potentials. So, China sought to seek reassurance. Okay. All right. So we all know that America and China they hate to see each other's guts. So uh, somehow China is making an exception for these three or four companies. They have made an exception for Apple for years. They have let Apple do business in their country. No other tech company from America is basically doing business there except Apple and Steam. These are the only two companies who are allowed. And surprisingly, they still relinquish, even though the things are worse between America and China. Apple is still managing to keep play a safe card and make sure that everything is going good with China and America both at the same time. Yeah, that is crazy. Like they have amazing people over there. They have one of the best people. Like whatever the things they are doing. They're like making sure that it is a like perfect. Like people are genuinely great. Like only selected people get to join Fang for a reason. It's crazy. What's happening? Why is my this thing ain't working? Wait. Wait. Give me a sec. What's going on? Why can't I see my own stream here? All of a sudden. Okay. Okay. Let's see. Give me a sec, guys. Apparently, I screwed up the title of the video.
Yeah, you might see it's stop gone crazy. It should be going. No, so yeah, it's pretty, yeah, finally fixed, and now I'm going to promote this correct grammar so that people get satisfied. Oh my God. It was just like a stupid thing, guys. It was just a stupid typo. People are getting crazy, like, hey, there's a typo in your title. Fix it, fix it, fix it, fix it. So many people texting. There's not even that much people watching. There's only one person watching. And like, God. Okay, but one subscribe. Yeah, I got 101 subscribers. That's in binary, brother. China will continue to improve the business environment and welcome more investments in multinational companies in China. Yeah, that's so much. OpenAI Meta in talks with Reliance for AI partnerships. Reliance just manages to pull every single big partnership in India. Every single one of them. They have deals with Apple, Warner Brothers Discovery, Comcast, NBC Universal, Paramount, um, uh, Starlink, whatnot. Every rival company, they are facing each other. They are partnered with Reliance in India. I don't know why. Microsoft, Apple, Facebook, whatever. They are rivals. They hate each other, gut. But they are partnering with Reliance. It's just so crazy that they are so aggressively expanding. You would see what Reliance is doing right now come to fruition in 10 or 15 years. They are not a big company yet. The amount of things they are laying off right now will be in fruition really in 5 to 6 years. I say buy Reliance stock. I highly would recommend that. Like, no, actually, no, 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 no. Wait. It's internet. Okay, I can't do that. It's not just anyone. No, I don't recommend that. I am not a financial advisor and I did not do the stats. So, if I were me, I would have bought Reliance, but I would not recommend for you to do it. It's just basic facts that I'm stating and what I'm looking at. It feels like they would be doing good, but yeah, you can't blame me later. Yeah, shit, I lost money because of you. Don't buy because I said. Okay, anyways. Shit. Okay, wait. Where is the live chat? Okay, yeah. Live chat is here. OpenAI and Meta platforms held separate. Yeah, they hate each other's good. They make llama model. This is like GPT. This yeah, both are same things. Both are large language models. But yeah, they're rivals. That's why India's realized industries have a potential partnership to expand AI offerings in our country. A possibility discussed involved the relation between Reliance's Geo and OpenAI to distribute ChatGPT, according to the information, which cited two sources familiar in the matter. Man, why is not Reliance just closing in the entire thing and making sure the data in India stays in India? Like that would be a good approach to like really make sure that the country come to fruition. If the data is not getting away from our country. It stays here. We develop the technologies with that data. We would be the ones scraping that data, not American tech conglomerates. I think that's the mistake we are doing right now. If we stop the amount of data that is being flown, like, of course, you can't literally stop it, but yeah, prosecute or make sure, like, in some way or the other, it is possible to let's make sure the servers are here. That would be great. uh, we would be able to extract so much things with that data. That would be really useful for servings, for other stuff. And of course, privacy is an illusion at this point. At this point, nobody is fighting for privacy. Everyone is like, yeah, take my data, make sure my products which are coming are good. Make sure the voice, like whatever AI model you're using, is better than what it is. You're happily giving the data. People are so chill about that now. Nobody's talking about, no, my data is going away. When they see finally that their data, which was collected, is making this much impact, still people don't realize it. It's crazy. আমার data নিয়ে কি হয়ে যায়? What is going to happen if you take one of my data? Ask anybody. That is the same response. But it matters. That same data, if cultivated, could be so impactful for any other sector. Oh my God. A rant. We went to a rant. That is fine. It's a stream. I can go to a rant. This is my space.
India welcomes three new airline companies. That is nice. Lately, all I see is no airline companies. There are like only Indigo and SpiceJet and like Tata. There were so many at a point of time. Now everything got merged, acquired, and spun off to one single company or the other. And there are like three, four. There should be more. There should be competition. Indigo has so much slot. They just bought up slots from old scravyard, dead air flight companies, aerospace companies. I don't know what they are, whatever. But I know that Indigo like bought a lot of time slots, prime time. Uh, Wait a second. Hmm. Which will be Shankh Air will operate from Noida Jewar International Airport, while Kerala will host two new air rides, Air Kerala and Al Hind Air. Oh, that's a great name, Al Hind. I don't know why. Shankh Air, Air Kerala, and Al Hind Air. These are the three new airline companies which are popping up. Would love to hear about them more in upcoming days, but not in tragic plane crashes, hopefully, but in successful endeavors. We need competition in this space. The more competition is always better, always appreciated. Indigo is like far too lazy on that bench, and it's a very this business is a very money losing business. Not everyone can do this. Maintaining the profitability is really hard. So yeah, let's talk about Snow White. What's going on? Robert De Niro, mob drama, alternate Miss Power. I know a lot of things happened about this movie before it released. There were a lot of controversial takes, but apart from that, a lot of movies do that. But at the same time, it can be exciting. But what this movie really lacked was excitingness. This did not feel like something I would go look forward to. A story that has been told years ago. Disney doing it is not surprising. Disney does it every year. They are milking Lion King and Bambi and the stories they have made in the past. But the fact of the matter is that this one was just unappealing. It did not have any charm whatsoever. None of the trailers, none of the movie posters really made me feel like, God, this is recreating nostalgia. I have to watch it. This is like not good. It is like a average movie. It is not a bad movie by any stretch of imagination. Yeah, people will interpret this as to be a bad movie. It is a mediocre movie. But the expense that has been put onto it, the backlash that has this got for many political reasons, yeah, no wonder this movie won't make money. Only Murders in the Building, a show I really recommend a lot of people to watch. A very good show. They are having this guy as season 5 cast. He's a very like he's in that movie about war where Brad Pitt is also there. What is the name of the movie? Wait. It is of that very big director also. Oh God, I'm forgetting every single thing I was thinking about. So we are talking about what is the movie? No. I can't sing. I can't sing on stream. Wait. Anyways, I forgot that. Uh, he's famous for, yeah, see, let's see. I remember it immediately when I see it. Inglorious Bastards, of course. Inglorious, he was in Inglorious Bastards, yes. I know him, and from other things also. I've seen him popping here and there. That is good. He's in the fifth season. The show has concurrently brought very disruptive names and has a very heavy hitter cast, and probably is a guilty pleasure now than a great show. It is really like if it ain't broke, don't fix it approach. Like it's the same thing over and over again. Like every time there's a crime in the building, and somehow every at the end of the season something goes wrong, someone dies,
and that creates another show. And it's I'm not complaining. It's great. I would love to see more of it. It's just casual comedy, and it's good. Okay, can Flash breathe new life into Tata Group super app dreams? This is a problem with Indian news articles, man. Like, why? This is not newspaper. No one is cryptic enough to understand this. This is not clickbait. This is like puns. This is like classic 1980s American British newspaper. Let me tell you, Tata Neu is an application that Tata was imagining to be their super app. What is a super app? Everything that every product they serve will be there. So in Tata Neu, you can buy a car from Tata Motors, ideally, shop from Big Basket from Tata, maybe shop coffee from Starbucks, book hotels of Taj, eat from Ginger, whatever, book tickets of Tata Air, everything the Tata ecosystem, Tata West Side, let it be Titan watches, they have a huge fleet of companies. They have partnered with thousands of companies. Maybe even enroll in TCS. That might be an option someday. But the fact of the matter is that did not come to fruition. The app I used was clanky. It was not very intuitive, and yeah, they had different pages, like for one page for Chroma, what one page for Big Basket, one page for Tata 1MG. That is not intuitive. You have to blend in it a better way. So they are making another app called Flash, and Flash is ideally um, going to be a instant delivery app, like basically a reincarnation of Big Basket, the fifth reincarnation. I remember Big Basket used to be competing with Grofers in just grocery deliveries, nothing else but groceries. Then they both started to sell. The second version of Big Basket is they both started to sell other things like Big Bazaar does. Big Bazaar, or like those people used to do. Then they got acquired by Tata, and they had a new breather, and Grofers became acquired by Zomato and became Blinkit. And they said, never mind, we have to pace up, and started to increase the amount of uh, competition. And then now they are a quick commerce app. Like Big Basket has like several lives. It does not die. It's just ever, it's always there. Sasi, okay, see Tata new pilots 15-minute quick delivery service amidst quick commerce boom. Yeah, we all know quick commerce is a huge thing right now. So what they are going to do is 15-minute delivery services across multiple categories, including groceries from um, groceries, electronics, fashion. So like West Side, um, then what is this? Zudio from fashion. You have Chroma and Tata Digital from electronics. You have groceries from Big Basket. You have medicines from Tata 1MG. They have the infrastructure laid off for years. They're just going to create that hub. Maybe even like make sure your Tata Motors dealer is around so that they can have the Tata car. I don't know. Like this is a crazy, like you don't understand how big Tata and like Reliance really is when you really think about what are the things they own. They have hotels, they have they have flight companies, they have tech companies, they have a semiconductor company now, a battery company now. These are future optimistic things. These are going to be basic infrastructure of the future. A semiconductor facility, Tata is making one with Apple. Make sure with no one else than Apple, with Taiwan TSMC. That is incredibly crazy. Not only that, they have a battery. Like EVs are going to be future. Everything is going to be battery oriented. So they are having an IPO of Tata Battery and a lot more. They are not only making like semiconductors, but also like smartphone manufacturing and other electronic manufacturing hubs. They have a lot of things in their plate. It is crazy how Tata is expanding. Like, if it's my money, it's going in Tata and Reliance, because
You don't understand. India is going to grow. Yeah, income and parity, everything. Yes, people are going to lose money. People are poorer. Poor people are going to be poorer, but rich are going to be richer exponentially, and a bigger section is going to be richer. Or at the same time, maybe just a little, but still it will increase, resulting in a real big boom in these two companies. They are laying off everything. Every money they have right now is being shoved into different sectors to start a facility. Tata Reliance is doing it with AI. They are doing it with the semiconductor. They are laying off the facilities in India, partnering with international companies, make sure it's quick and fast. Within 5 years, these individual companies will be as big as every other household names they have, will be as big as Geo. Look at Geo Hotstar out of nowhere. It is the biggest streaming hub in the country. Every international program, you name it, it's in the platform. This is incredible stuff. Have you used Zepto Cafe? What is Zepto Cafe? What is Zepto Cafe, man? Holy heck, what is this? Wait, Zepto. Zepto is quick commerce. Okay, wait. I was talking for so long. Okay. And we can buy like Mio Amore stuff from here. Hey, that is actually not a bad idea. That is insta clever. But the problem is, Big Daddy in this industry, it's Zomato and Swiggy. Being a chai coffee in 10 minutes. Brother, so is these companies are doing it. And they are not doing it alone, but with reputed brands like Cafe Coffee Day, Starbucks, MBA Chai Wala, whatever you name it. This is coming from the reputed restaurants. Now, a quick commerce company giving me food, that's good enough. But a real proper food place giving me food, that is far more like legitimate. And personally, for me, if I am in, like, I am not even using Zepto, I use Blinkit and I use Zomato. Like, this is Zepto diving into the food business like Zomato did with quick commerce. It's just another chess game to grow bigger. This is interesting, man. This is a very unique set of things I have never tried. Personally, my place does not have Zepto. It has Blinkit, Big Basket, whatever. What is that? Flipkart Minutes. I have Flipkart Minutes. I have never used it. I have that Spencer's now have an e-commerce application. GeoMart, more, you name it. Everyone is in quick commerce right now, and everyone is here except Zepto. Swiggy, Instamart. I don't know. Man. There are so many of them, but I have not used Zepto yet, so I did not know about that for a reason. But hey, that's a nice. That's exactly like every other app. Eh, It used to be different, you know. Every single app in this quick commerce application used to be very different. Surprisingly, it's all same now. You open like, man, we can dive into quick commerce someday. Quick commerce is such an important topic that is not discussed much. Like, um, none of the international brands know about this. Like, I saw Mr. Who is the Boss's video. He came to India. He was astonished by it. He thought it was like magic. He was sitting at a home pressing a button about to buy PlayStation 5. Within 5 minutes, PlayStation as it is in your place. Imagine that. It's like, you know, I really give this example because I really have this in mind. I remember a movie where I saw used to be in childhood called Chankuliki Mankuli, where the guy lived in the five-star hotel and started calling, and every 10 seconds he started to order something, and that comes in your real life. This is nothing else than that. At that time, it felt like a dream. Like, wow, I wish that is true. Today, it is. Quick commerce application, you can have proper food, like proper course meals within 10 minutes delivered. Zomato has 10-minute delivery. Swiggy has 10-minute delivery. Zepto is diving into this game. Like, we are not talking about hours. America needed drones to figure out 1 hour delivery. It needed them drone. They did AI, whatever. Our guys made sure we have good bike, scooter. We made sure we go into the corner. That is innovation. That is such a jugaad thing. No other country has this. None,
no other country. Trust me, quick commerce is such a blessing. The moment America and USA really starts to know about this, Amazon knows it. But Amazon really knows that India, for them to compete in India right now, they have to make Amazon taste. That's their platform. They are rolling it very soon. They have started to roll out in Bangalore and places. But they can't they make sure that that is not information that other countries know about, because they are getting drone deliveries and things are dropped off from drone getting shattered, and it takes them like literal years to do it. It's very expensive for them. Implementing this same format in America would cost them billions of dollars in losses, because the employment there is off the chart. The prices are very high for individuals. Here, you just have to pay 10 rupees, 12 rupees for every delivery. That is chump change for Amazon. It's a breezer. They don't have to basically pay any dime to the person who is delivering. They are basically incorporated slaves. That is such a horrible thing that I'm saying. I feel horrible about it, but this is what is happening. And you have to pay a human value to each one of them in America. At least the constitution has a basic price for hourly wage when in every state. You cannot pay a person lower than that for any job. That is amazing. And that's why they can't do it implemented there. Because implementing this, no people won't buy if the thing is expensive. The only way to allow the expense is to make the thing expensive. And if buying a banana, like, see, I'm looking at here, where is it? Buying a banana for 80 rupees, I'm not doing it. Why? Does not justify. Man, I really want to eat something now. Whew. Man, these are nice foods. Such foods are so nice. Foods are like ASMR, brother. Chai, coffee in 10 minutes. Yes, Devsottam. We dived into such a deep thing. So, yeah, that is Tata Flash. I have to update the new app. Make sure that I am Nifty 50 turns positive in 2025. After months of salvation, after months of seeing the red line go down and hoping that will it ever go up, it finally does. It went positive, and that's a big relief for people who has money in the market, because it was infuriating. You see, every time you open your phone, your money is going down every day, lower and lower. Let's say if you had 100 rupees in the market, the lowest it went this time was 48 rupees. 50% of your money was just evaporated. That's scary, man. Looking at it, scrolling Zomato is greater than Insta brain rot, but it makes you. There's the thing. Instagram brain rot does not make you feel like spending money. It does not give you physical pain. It does not give you palpitations. Zomato does. It makes you feel like, bhai, I want to eat this. And then the moment you order it, you eat it, immediately feel like shit. I just spent 200 rupees on something. Because you won't order something less than 200 rupees. Because you get to pay like cash on delivery at that point. You won't make sure. Why would you pay COD? We are Indian people. We will never pay for delivery. We will try to make sure we buy extra things to avoid COD. That is what Blinkit and every other company does. They know that if we remove the COD, they would just order one cigarette and just sit there, or like one milk and just sit there. That is infuriating. Every time they want to order, they would order something like one shot. That is so expensive for them. So much oil wasted. Man, my back hurts. Wow. All right. Wait, let me just put it here. That is nice. That is nothing else to do here. Hindi Chini Bhai Bhai. What's wrong, brother? India China relations. Modi's hope for a thaw amid uncertain geopolitics. What is thaw? What is thaw? Thaw is a Bengali alphabet. Thaw. I did not know it's a word. Thaw. Another frozen substrate such as food becomes liquid and soft. Ahoy. Oy hoy. Modi's hope for a soft what? Okay. Soft landing of economics collapse? I don't know.
Prime Minister Modi spoke positively about India's long relationship with China. Oh no, relationship with long-time rival China. Okay, I'm bad. He said normalcy has returned to the India-China dispute borders for and calls for a stronger tie. Yeah, I hope there is peace, and I hope there is no conflict. Not now, not now at all. This would be such a bad time for conflict. Immediately, World War One, war, any kind of invasion right now, any single country, let it be Lithuania and anyone else around them, it might be impactful enough to cause a world war. Any single small thing, we are this close to a world war right now. We are so close to a world war. So many countries are unhappy with their leaders, and so many countries are unhappy with each other. And we have dictatorship powers amongst the countries now. America is a dictatorship. China is a dictatorship. Every country is a dictatorship at this point. India is a dictatorship. Think about it. Technically, it is. Like, like they can do anything right now. Like not conventionally dictatorship, but in war-based situations. I should not have said dictatorship, but in war-based situations, they are like very. They won't forgive anyone. India might. India will. India is very diplomatic. They would not use any weapons. Very diplomatic country. That's good, man. That is like the more saner thing to do amongst warfare. But yeah, if someone starts to attack us, we would obviously. I don't think anything's gonna happen. Like yeah, a lot of things is going to happen or whatever. Why am I talking about this so much? God. Okay. Why Elon Musk Grok? I don't want to cover it. Okay, this is interesting. Apple is losing over a 1 billion a year on streaming services. But it has 45 million subscribers. So just in scale, wait. Yep. This is the scale of the biggest streaming services in the world. Okay. So it is Netflix with 300 million subscribers. We have Disney, who has like all total around 250 million subscriber. Yeah, 234. Yeah, that's the total amount because they have separate entities. There's Disney Plus, there's Hulu, there's ESPN. Amazon has 200 million. YouTube Premium has 100 million. It is Chinese companies like IQV, Tencent Videos have like another 100 million each. Max has 100 million as well. So amongst them, you don't see the most critically acclaimed streaming service, Apple TV Plus. Apple TV Plus has less subscribers than Z5. Z5. Z5 has nothing. Z5 has no content. Nothing is there. And they are smaller in scales of Apple TV Plus. But here's the thing. It's not like Apple TV Plus is in deep trouble. If I just dumb it down to you, what Amazon does is Amazon makes sure that you shop from them every single time, and to hook you, they bundle in Amazon Prime Video for it. So you get to watch amazing shows, making sure you shop from them all the time. That is the bait. And here, Apple is doing the exact same thing. Apple is doing literally the same thing. They are making sure the Apple users are getting hooked into the platform. Like previously, currently they started rolling out Apple TV Plus Android application. But before this, there was no Android application to watch something from Apple TV Plus, a content, a movie. To watch that, you need to have an Apple device and me also or Windows browser, any one of them. Yeah, but still, it was very rudimentary of a website for Windows. It was a basic website. They slowly have developed, and now it's a proper streaming service. It has matured to be a total platform rather than just a hub in Apple TV. But yeah, this comes under services, a category that Apple shows as the statement. And it says that Apple is currently earning
over $100 billion every year on services, which includes Apple News Plus, Apple TV Plus. Wait, I'm showing you. What are the services that Apple sells? These are the things. So, where is it? Yeah. iCloud, Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade, Apple News Plus, and Apple Fitness Plus, and a few more things. These are the services section, and that earns over $100 billion. Looking at it and looking at the critically acclaimed television they are making, it is very easy to say this money is chump change from for um, Apple, and Apple is far more profitable, making sure these things are good. And Apple has such an amazing um, quality over quantity approach. Then that is radically opposite to what Netflix has. Netflix is like more content, less quality, and they're completely opposite. They are Apple TV Plus is very selective about picking their content. Everything they have is amazing. Every single thing. Like you go to the service, you pick up a platform, you watch everything there will be a quality show. Like Severance, a classic. It is going for the Emmys this time. Ted Lasso, it won Emmys, so many Emmys. It is one of the my personal favorite shows. You go, you look into it. There's like literally critically acclaimed actors in different movies, and none of them are bad. Everything you see here is watchable and entertained. Like you will be entertained watching it. So this is a very quality service, and Apple is willing to lose money over it because the implications this has, the reputation that is Apple as a company gaining from this TV Plus, and the goodwill that it has amongst other user bases makes Apple look more better of a company. And at that point, being the biggest company in the world, $1 billion does not really matter to you. This is really amazing. Everything. Severance is such a great show, but so is like so many other. For All Mankind, Ted Lasso, Dickinson, then Morning Show. They have like Oscar-winning movies. Best movie for Oscar went to an Apple TV Plus movie, Coda in 2023, I guess. It is amazing how good quality they are serving, making sure they are getting all the best awards. They're very picky about their content. They are very curated, making sure that they really maintain their standard of being a classy service. It's a great platform. It does not have a huge catalog of old nostalgia bait like Office or Parks and Recreation or like whatever you are, Suits or Breaking Bad, making sure that people are getting hooked. But they keep on making a really good library of new shows, and that will be big enough someday to make Apple TV Plus a really compelling streaming service and profitable. And the approach they are taking will be fruitful in the long run, like Apple really does. Apple really would bleed money till it gets really reputed and has profit. They have the money to do it. Yeah, that is amazing. Let's see some news again. Like I'm just covering news at this point from 7:30 now to 9. India has such an ambitious defense target to export 50,000 crores of weaponry by 2029. I think weaponry. I think by defense it says weaponry. That is nice. That's okay, fine. India added 1 trillion to the economy in last 3-4 years. It will add another next trillion to 2-3 years. That is an exponential growth. That is good for our economy. Um, but yeah, who are getting the money? I don't know. De demolition drive by local administration, Ambedkar Nagar district. Oh, I want to see that. Indian government has increased salary of MPs and ex-MPs. So they have increased their own salary, and this does not include like the briberies and stuff. That is crazy. Very important. Now MPs struggle day in and out to create needless chaos in the nation. It needs to be compensated enough. This is such a good sarcastic tweet.
Yeah, okay. Uh, okay. Maharashtra doing a good job of attracting investments and then comes up with unnecessary fringe of the element to occupy the headlines. Next 2 decades, discussion should be about development, investments, and poverty elimination. Okay, fine. That is just okay. India reportedly considering relaxing trade and investment restrictions imposed on China after the 2020 Galwan crash. Okay, that is optimistic news. RBI has approved to increase ATM interchange fees, raising charges of 2 rupees for financial and rupees 1 for non-financial transactions of May 1st. So ATM fees will be 2 rupees, 2 rupees for financial and 1 rupees for non-financial transactions. So even if I check my balance, I will be deducted a rupee. Oh my God! I'll rather do it in Google Pay. That is so strange. Like there are people, there are old people, there are uneducated people who doesn't really have access to the internet. They would physically go and check their balance, update their passbooks. Getting taxed, like basically, this is getting taxed only. Getting taxed on every single one of those checks, especially to the people who really need the money. Nobody is using ATM in urban cities. Yeah, for cash money, of course. But okay, man, whatever. In 2024, tech companies secure a fifth of the H-1B visas issued by the US. So H-1B is basically a visas allocation that is done for America to import talent from other countries. So import employees. So 1/5 of them are acquired by tech companies. They would hire, like Amazon would hire this many. Infosys will hire, wow, Infosys hiring so many. Cognizant, Google, TCS, Meta, Apple, Microsoft, HCL, IBM. These are big companies, every single one of them. It's good news, man. Cars in India are to get costlier from April 1st. So if you plan to buy a car, I think it would be a right time now. Unless you are planning to buy it 5 years later. Of course, that might happen as well. Microsoft is building their research and development campus after its Redmond headquarters in Noida, Uttar Pradesh. Wow, man. These, like, Uttar Pradesh is getting so many big companies to develop things for them. That is so nice. Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath announces PM Mitra Park in Lucknow. Okay, fine. 6% of the survey household in India receive water of drinkable quality. Okay, fine. That is like unfortunate, but yeah, that is true. Minister Nitin Gaikwad announces the government will introduce new toll and reasonable concession for consumers. Okay, that's pretty much it. Let's go to our main segment today. You know, let's watch this. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सनसनीखेज खबर के बारे में। पिछले साल सितंबर में इंडिया और पाकिस्तान का T20 मैच चला था एशिया कप में, और उस मैच के दौरान आपने युवराज सिंह की फोटो देखी होगी जब वो बैट पकड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। वो प्रमोट कर रहे थे वन को, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ब्लॉग। और युवराज सिंह की नहीं, कई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसी शेडी एप्स को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हो ऐसी ऐप से। घर बैठे बैठे you can make 5,000 into 25,000 and 25,000 into lakhs. और ये बस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स नहीं, बल्कि राजपाल यादव जैसे एक्टर्स भी कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, आईडी लो और जीतो ढेर सारे पैसे। और ऐसी एप्स के भी बड़े अतरंगी नाम है, अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी। इनके नाम से एप्स बनाई गई हैं। सभी एप्स ये कहते हैं कि वो इंडिया में अकेली लाइसेंस स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। संडे टाइम्स ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग के कई फुटबॉल क्लब्स ने भी अपनी स्पॉन्सरशिप डील्स कैंसिल कर दी। पर इन चीजों के बावजूद 1x इंडिया में बहुत अग्रेसिवली मार्केट कर रही है। और 1x अकेली कंपनी नहीं है। अब बात करते हैं फेयर की, जो बोलती है कि हम न्यूज वेबसाइट है। इस न्यूज वेबसाइट को कई इंडियन सेलिब्रिटीज भी प्रमोट कर रहे हैं। ये कंपनी कहती है कि हम इंडिया की बेस्ट स्पोर्टिंग ऐप है। इनफैक्ट एक कंपनी ने मुझे कई ईमेल्स भेजे हैं एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जबकि वो ऐप करीब 140 ऐप्स में शामिल है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है। इंडिया में बेट और गैम्बलिंग इलीगल है, जिसका मतलब है कि ऐसी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स भी नहीं कर सकती। पर इन कंपनीज ने क्रिएटिव तरीके निकाले हैं। Holy heck, bhai. I think that's why my video is not getting a reach today. You can't say betting and gambling. गैम्बलिंग इलीगल। Wow, I have to change my title, man. Okay. Uh, these apps. Yeah, let's do this. This is better. इसका मतलब है कि ऐसी कंपनीज Unfortunate, man. Did a stream
with literally no making sure that nobody watches it. That is unfortunate. Wow. नहीं कर सकती, पर इन कंपनीज ने क्रिएटिव तरीके निकाले हैं ना ही अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए और इंडियंस को अपना माल बेचने के लिए। अब आईपीएल स्टार्ट हो रही है, इसकी वजह से इन कंपनीज की मार्केटिंग और बढ़ जाएगी और इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ इन कंपनीज के बारे में कि एडवर्टाइज कैसे करती हैं और अपना इलीगल धंधा कैसे चलाती हैं और इनमें और ड्रीम 11 या फिर एमपीएल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये कंपनीज इंडिया के सबसे बड़े धर्म पर पैसा कमा रही है, क्रिकेट। इन कंपनीज को समझने से पहले समझते हैं कि गैम्बलिंग का क्या इतिहास रहा है इंडिया में। ये सीन है महाभारत से, जहाँ युधिष्ठिर द्रौपदी और अपने पूरे साम्राज्य को दांव पर लगा देते हैं और उसके खिलाफ एक गेम में। अब मुझे नौ की आवश्यकता है। जो हमें बताता है कि गैम्बलिंग कोई नई चीज नहीं है, इसके कई रूप हमने देखे हैं महाभारत, रामायण और अर्थशास्त्र में। मुगल इंडिया में भी गैम्बलिंग हाउसेस थे जिनको सरकार सपोर्ट करती थी, उनको कहा जाता था सट्टा बाजार। इन सट्टा बाजारों पर सरकारी अफसर निगरानी रखते थे और कई तरीके की गैम्बलिंग इधर हो सकती थी, जैसे डाइस की गेम हो या फिर पत्तों की। पर मुगल रूलर्स गैम्बलिंग पर कंट्रोल भी रखना चाहते थे ताकि किसी का भारी नुकसान ना हो। जैसे 1579 में अकबर ने एक रूल क्रिएट That किया, is उसे nice. पॉपुलर डाइस That की is गेम। such a nice way thinking, making sure that this thing is regulated enough. Like, problem is that at this modern time, Akbar made sure that betting and gambling was moderated enough. But nowadays, people don't think that. You can gamble as much as you can. Like, that is so sad that a person coming preceding 1500 years ago made sure that that was not happening, and now it just happens. Like, there was a reason he did it. Like, yeah, you get crazy amount loss. You would not earn a lot because of this. चौपट। और उन्होंने कहा कि आप इस गेम में एक You लिमिट से lose ज्यादा a lot of money. These games are made to be lost. ऐसा नहीं लगा सकते। ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों ने पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के जरिए 1867 में गैम्बलिंग को बैन कर दिया। इसका मतलब था कि जो सट्टे बाजार थे इंडिया में वो इलीगल हो गए। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टेट्स अपने खुद के रूल्स बना सकती थी इसको लेकर। जहां कुछ स्टेट्स ने कंप्लीटली बैन कर दिया इस चीज को, दूसरी स्टेट्स जैसे केरला ने लॉटरीज को लीगल कर दिया जब तक उनको चलाया जाता है लाइसेंस ऑपरेटर से। इनफैक्ट कई स्टेट्स खुद की लॉटरी चलाती हैं और उससे पैसा कमाती हैं। अब जहां गैम्बलिंग और बेटिंग कंपनीज आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स प्रॉमिस करती है, सच बात है कि आपसे मोस्ट लोगों को फायदा नहीं Even I've heard Japan, I think France is doing it as well. They were thinking of doing this, like making sure they get revenue from gambling, like doing a lottery every month and earning the revenue from it and making sure one gets the money as well. That actually statistically that showed that it would help them in a certain way. But of course, there are cons that have been discussed as well that I've forgotten. Yeah, so you watch this video. I'll be right back. पर एक चीज जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं वो है मोबीक्विक। मोबीक्विक ऐप से आप Oh my God, that's an ad. Really? Really? क्योंकि क्रिकेट में स्किल की बहुत जरूरत है। इंग्लैंड में उधर के कोर्ट ने डिसाइड किया था कि गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। अब जैसे आप कह सकते हो कि क्रिकेट में स्किल की बहुत जरूरत होती है और लक थोड़ा सा रोल प्ले करता है, जबकि आप कह सकते हो कि सांप सीढ़ी में स्किल की इतनी जरूरत नहीं होती और लक सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। और आरएमडी चमरबॉग वाला कह रहे थे कि ऐसी गेम्स जिसमें स्किल की ज्यादा जरूरत होती है उनको क्यों बैन करना चाहिए, और 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। उन्होंने कहा कि वो गेम्स जिसमें स्किल की ज्यादा जरूरत होती है उनको बैन नहीं किया जाएगा। अब इस 1957 की रूलिंग को ही कई कोर्ट्स ने यूज किया ये डिसाइड करने के लिए कि किस गेम को बैन करना चाहिए और किसको नहीं। जैसे 1996 में सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा था कि हॉर्स रेसिंग एक गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉर्स रेसिंग एक गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि अगर आप कर रहे हो किसी घोड़े पर तो पैसे कमाने के लिए आपको घोड़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रैक की, वेदर कंडीशंस की और कंपटीशन की। जिसके बाद कई और स्टेट्स ने हॉर्स रेसिंग को लीगलाइज कर दिया। पर ये आता है कि डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। हर गेम में दिमाग लगाना पड़ता है कि कितना परसेंटेज स्किल है इसमें और कितना परसेंटेज लक। इसलिए ड्रीम 11 और एमपीएल ऐसी एप्स जिनको फैंटेसी गेम्स कहा जाता है उनको गेम ऑफ स्किल माना जाता है, क्योंकि आपको टीम बनानी होती है बजट से। इसलिए इन कंपनीज ने ये आर्ग्यू किया कि आपको स्किल चाहिए पैसे जीतने के लिए, आपको टीम्स और प्लेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी वजह से ये एप्स लीगल नहीं है। जबकि अगर हम एप्स जैसे 1x की बात करें तो वो इलीगल है क्योंकि उसमें लक ज्यादा इन्वॉल्व होता है। 2019 में ड्रीम 11 इंडिया की पहली गेमिंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनी और कुछ टाइम बाद एमपीएल एक यूनिकॉर्न बन गई। इनफैक्ट फैंटेसी गेम्स की पॉपुलैरिटी की वजह से अश्नीर ग्रोवर ने भी एक नई स्टार्टअप लॉन्च करी। ऐसी गेम दूसरे देशों में कई टाइम से पॉपुलर है। जैसे मुझे Heck nah, In fact, brother called it cricket pay. की वजह से अश्नीर ग्रोवर ने Brother भी एक नई called startup it launch करी। ऐसी cricket pay. That is such a obvious name. Bro had Bharat Pay and he made cricket pay. दूसरे देशों में कई What? टाइम से popular है। Why? जैसे मुझे याद है कि मैं कॉलेज में फैंटेसी प्रीमियर लीग खेलता था, जहां हम फ्रेंड्स पॉइंट्स जीतने के लिए बेस्ट से बेस्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम बनाने की कोशिश करते थे। वैसा ही कांसेप्ट है ड्रीम 11 का। ये कांसेप्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था एक्चुअली 2001 में। ESPN इंडिया ने लॉन्च किया था और इस गेम का नाम था सुपर सेलेक्टर, जिसमें भी आप एक टीम सेलेक्ट करते हैं, Damn. पर इसमें आपको पैसे नहीं मिलते, बस आपको पॉइंट्स मिलते हैं और आपका नेम अनाउंस कर दिया जाता अगर पूरे टूर्नामेंट के विनर होते हैं। ड्रीम 11 और एमपीएल ऐसी एप्स में कैश पूल का कांसेप्ट होता है। बेसिकली अगर 100 प्लेयर हैं, सबने 10 रुपए डाले तो पूल हो गया 1000 रुपए का, और जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको 500 रुपए, 300 रुपए और 200 रुपए दे दिए जाएंगे। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो जो विनर्स होंगे उनको पूरा पूल मिल जाएगा। अब कई लोग ये कहते हैं कि ये चीजें भी बैन कर देनी चाहिए। उनका आर्गुमेंट है कि स्पोर्ट्स में जो लोग रिस्क लेते हैं वो रिस्क को ऐसी एप्स में भी ले सकते हैं। वो ये नहीं मानते कि इन एप्स में जीतने के लिए स्किल चाहिए होता है, लक नहीं। उनका मानना ये है कि स्किल बस कम ही प्लेयर्स यूज करते हैं। I really believe like this is not a skill-based game. Dream 11, MPL, these are not skill-based games. This cannot be. This is pure luck as well. How are you supposed to know how those players are there? What is the temperament? What is the mentality? No one can predict a match. That is literally impossible, impeccable. If people were able to predict matches, that that basically ends the exhilarating excitement about sports. Sports is about the unexpected, the underdogs winning. You never know what happens. And it's unfortunate that people are not realizing that. Games, any sport is unprobabilistic. You cannot conclude to the answer. No, not with your human brain.
That is not possible, at least. Maybe a computer, maybe algorithm, someday, but not with our human brains. So this is gambling. This is definitely gambling if someone says this is not. यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपना पैसा हार जाते हैं। जबकि दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि इस गेम में जीतने के लिए स्किल चाहिए होता है और ऐसी चीजों की वजह से फैंस की और पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है अपने स्पोर्ट में, उनका प्लेयर्स और अपने स्पोर्ट के साथ और लगाव हो जाता है। अब एथिक्स के बारे में हम जरूर बात कर सकते हैं, पर ये क्लियर है कि This is what gambling does. It creates more addiction towards that thing. इन लॉ के हिसाब से ये एप्स लीगल है, पर ये चीज फेयर 1x के बारे में भी क्लियर है कि ये सारी वेबसाइट्स इलीगल है। इनमें से कई कंपनीज प्रोसिक्यूट इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि 1867 की पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑनलाइन और फिजिकल थिंग के बीच में कुछ अंतर नहीं बताती, क्योंकि ऑब्वियसली उस जमाने में कुछ इंटरनेट था नहीं और ये कंपनीज इसी लूपहोल को यूज करती हैं अपने आप को लीगल प्रूव करने के लिए। अब आप ये जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर मुंबई इंडियंस पर सट्टा लगाना चाहते हैं या फिर चेन्नई सुपर किंग्स पर, इसमें भी स्किल चाहिए होता है। आपको पता होना चाहिए कि टीम्स कौन सी हैं, कहां मैच खेला जा रहा है। पर इंडियन लॉ ये मानता है कि अगर किसी गेम में बस बाइनरी आउटकम है, बाइनरी आउटकम मतलब दो ही चीजें पॉसिबल है। जब आप सट्टा लगाते हो टीम में या तो हारोगे या फिर जीतोगे, क्योंकि ड्रीम 11 में आप सारा पैसा हार सकते हो, कुछ पैसा जीत सकते हो, बहुत पैसा जीत सकते हो, कई ऑप्शंस होते हैं। इस वजह से उसको गेम ऑफ स्किल मान लिया जाता है। और दूसरी चीज है कि ड्रीम 11 या फिर एमपीएल ऐसी चीजों में आपको कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर किस पोजीशन में खेलेगा, जबकि सट्टेबाजी में आपको बस एक ही डिसीजन लेना है, तो सट्टा लगाना है या फिर नहीं। इसी वजह से इंडियन लॉ की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ऐसी एप्स में लक ज्यादा जरूरी रहता है और स्किल इतना नहीं। तो फिर ये एप्स 1x फेयर या फिर लोटस 65 Okay, so it is not binary based decision. So India the parlay would be allowed because parlay has multiple decisions that you have to take so that you get a lottery. What is this logic? करिए इंडिया में मैं आपको बताता हूं। इन वेबसाइट्स पर एक प्लेस करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। 1x के केस में इस अकाउंट को बनाने के लिए जो आपको ओटीपी भी मिलता है वो मैसेज इंग्लिश में नहीं होता बल्कि रशियन में होता है, क्योंकि ये कंपनी ओरिजिनली रशिया से है। फिर आप कई स्पोर्ट्स पर सट्टे लगा सकते हो, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर टेनिस। मान लीजिए कि आप गुजरात टाइटंस और सीएसके के मैच में एक सट्टा लगाना चाहते हो, तो आपको ऑड्स दी जाएंगी। मान लीजिए कि चेन्नई की जीतने की ऑड्स है 5/4। इसका मतलब है कि अगर आप 4 रुपए लगाओगे कि चेन्नई मैच जीतेगी तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बेटिंग वेबसाइट्स एक डिपॉजिट अमाउंट मैच करने की भी कोशिश करती है। इसका बेसिकली मतलब है कि अगर आपने पहले 500 रुपए डाले तो कंपनी भी आपको 500 रुपए दे देगी, जिससे आप 1000 रुपए की स्टार्ट कर सकते हो। और आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। जब जर्नलिस्ट जयदीप वैद्य ने यूपीआई से डिपॉजिट करने की कोशिश करी तो उनको एक रैंडम यूपीआई एड्रेस मिला जिसका कंपनी से कुछ लेना देना था ही नहीं, और उन्होंने कहा कि हर बार जब वो डिपॉजिट करते तो ये यूपीआई एड्रेस चेंज होता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली ये कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ना इनका कोई यूपीआई एड्रेस है और ना कोई टैक्सेस पे करती है। ये इलीगल अकाउंट्स के जरिए पैसे कलेक्ट करती है यूपीआई से। तो ये कंपनीज अपना धंधा कैसे चला रही है? ऑफशोर एंटिटीज के जरिए। ऑफशोर एंटिटीज बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जो बहुत छोटे-छोटे देशों में लोकेटेड होती हैं जहां टैक्स बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, जैसे माल्टा या फिर कैरेबियन आइलैंड्स में कई छोटे-छोटे देश। इन देशों में कोई Hell टैक्स no. नहीं होता और बहुत आसान होता है आपके लिए कोई कंपनी रजिस्टर करना। ना आपको अपने फाइनेंसेस डिक्लेयर करने पड़ते हैं और ना ज्यादा कोई झंझट होता है, तो आपको खुली छूट है, आपको कैसे भी अपना बिजनेस चलाना है। 1x की बात करें तो वो साइप्रस में रजिस्टर्ड है, फिर कैरेबियन आइलैंड्स में कराकाओ आइलैंड में रजिस्टर्ड है, और ये कंपनीज बहुत चालाकी से इंडियन लॉज को यूज करती हैं ऑपरेट करने के लिए। ये सारी कंपनीज यूज कर रही हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को। ये एक स्ट्रेटजी होती है कस्टमर्स जीतने के लिए बिना कोई लॉ तोड़े। जैसे आपको ये ऐड याद है, जैसे ये ऐड है इसमें रणबीर कपूर, मैरी कॉम, साइना नेहवाल और कियारा अडवाणी सभी फेयर न्यूज को प्रमोट कर रहे थे। पर ये कंपनीज ये नहीं कह रही कि वो बेटिंग वेबसाइट्स है, वो कह रही कि वो न्यूज वेबसाइट्स है। ये वही तरीका हुआ जो अल्कोहल कंपनीज यूज करते हैं। Men will be men. अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट करना बैंड है, पर सोडा या फिर पानी तो वो बेच सकते हैं। Yeah, कुछ ब्रांड्स तो बहुत ही चालाक है, जैसे जाफा न्यूज, getting न्यूज वेबसाइट। televised news videos or like things about alcohols and now even tobacco is strictly banned, prohibited. So they would have to celebrate life or like music CDs or sodas. These are the terminologies they use. They are showing a lifestyle. They are selling sodas, but actually no, they are indirectly selling their alcohol. And eventually these gutka pan masala companies will catch up to this as well. Just right now, just before this IPL, this law was prosecuted that gutka pan masala our advertisements will not be allowed on television. So now they would also celebrate life, sell something, sell like I don't know, sell something else, offshore it and show it like this is the thing that is we are selling. That is the bypass way of doing it by law. Just like these Dream 11 and all are doing it, offshoring, making sure that the money is getting to the illegal accounts, and this is such a sketchy thing to do. It is such a red flag if I have to pay someone a big website about the and I scan it to a random ass address in UPI. That is not cool, man. That is so suspicious. वेबसाइट है जिसको बेटिंग ऐप डाफा ने सेटअप किया था, और उस कंपनी ने कर्नाटका स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया जिससे वो बैंगलोर ओपन स्पॉन्सर करने लग गए। एक और कंपनी है Betway। अब इस कंपनी पर फाइन लगा दिया था यूके गैम्बलिंग कमीशन ने, क्योंकि वो गैम्बलिंग बच्चों के बीच में प्रमोट कर रही थी। पर इसके बावजूद Oh वो साउथ अफ्रीकन no. T20 टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर बन गए। ये वही लीग है जिसमें मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलेटेड फ्रेंचाइजेस है। तो बेसिकली ये कंपनी साउथ अफ्रीकन लीग को क्यों स्पॉन्सर कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि क्रिकेट तो इंडिया में ही धर्म है। ये लीग चाहे चल रही हो साउथ अफ्रीका में, पर कई इंडियन क्रिकेट फैन इसको देख रहे होंगे और जब उनको Betway दिखेगा होपफुली वो भी सट्टा लगाने लग जाएंगे। पर इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कंपनी सरोगेट एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकती। इस चीज के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने एडवाइजरी भी दी थी कि टीवी चैनल्स को कंपनी से कोई एड्स नहीं लेने चाहिए, पर इसका कुछ असर पड़ नहीं रहा। इंडियन एक्सप्रेस ने हॉटस्टार, सोनी लाइव और युवराज सिंह से पूछने की कोशिश करी कि वो ऐसी इलीगल कंपनीज के साथ क्यों काम कर रहे हैं, पर उनको कोई जवाब नहीं मिला। ये कंपनीज ऑनलाइन एड्स ही नहीं बल्कि ऑफलाइन एड्स भी करने लग जाती हैं, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है इंडियन कंज्यूमर को। जैसे गैम्बलिंग वेबसाइट्स बैंड है इंडिया की आईटी एक्ट के जरिए। गैम्बलिंग के अलावा इनमें से कुछ कंपनीज ऐसे फीचर्स भी देती है जिसको हम गेम ऑफ स्किल भी मान सकते हैं, पर कुछ कंपनीज बस गैम्बलिंग नहीं करवाती, उनकी ऐप में कई लीगल फीचर्स भी होते हैं जिससे सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि गैम्बलिंग ऐप है भी या नहीं। जैसे फेयर की ऐप गैम्बलिंग भी करवाती है जो इलीगल है इंडिया में, और That is so stupid. If your app has gambling, this is a coding based question. If gambling not there, it's legal. If gambling there, even though it's a news app, it's illegal. If it has gambling, a section of gambling, it is a gambling app. What is this nuance?
स्पोर्ट्स भी खिलाती है जो लीगल है, पर ज्यादा एक्शन होता नहीं है। कई बार गवर्नमेंट अथॉरिटीज वेबसाइट को बैन नहीं करती। फिर दूसरी चीज है कि गेमिंग और गैम्बलिंग सेंट्रल सरकार के अंडर नहीं आता, बल्कि स्टेट सरकार के अंडर आता है, और स्टेट और सेंट्रल सरकार एक दूसरे की तरफ ही देखती रहती है और ज्यादा कुछ करती नहीं है। रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑनलाइन रमी बैन करने की कोशिश करी, पर गवर्नर ने कहा कि स्टेट असेंबली के पास पावर नहीं है इस चीज के बारे में एक लॉ बनाने के लिए। Now the What? government sent it back saying the government does not have legislative competence to pass this bill. इसी वजह से ऐसी स्पोर्ट्स वेबसाइट्स अभी भी ऑपरेट कर रही है इंडिया में। शशांक शेखर रायप्रोलू जो एक लॉयर है, उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट मानती है कि इंडियन सरकार उनके बारे में कुछ करेगी नहीं। वो कहते हैं कि उन वेबसाइट की तरह है जो इंडिया से ऑपरेट नहीं करती, पर उनके कई यूजर्स इंडिया में जरूर है। इसके अलावा ये कंपनीज कहती है कि ये देखना कि वो लीगल है या नहीं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यूजर्स को देखना चाहिए। जैसे अगर आप फेयर की वेबसाइट पे जाओगे तो वो कहते हैं कि लीगैलिटी डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन। अगर आप बाय बुक की वेबसाइट पर जाओगे आपको एक मैसेज दिखेगा कि अगर आप तेलंगाना, ओडिशा, असम, सिक्किम या फिर नागालैंड से हो, प्लीज लीव द वेबसाइट इमीडिएटली। अब ये वेबसाइट ने इन स्टेट्स के नाम क्यों लिए? शायद इस वजह से क्योंकि ये सरकारें अपने लॉज ऐसी कंपनी के खिलाफ ज्यादा अग्रेसिव है। तेलंगाना दिस इज बैन। इसका मतलब है कि आप अगर यूजर हो तो आप देखो कि बेटर है या फिर नहीं, हमारी क्या जिम्मेदारी। अब इंडिया में इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है कि इनका क्या अंजाम होता है, पर अमेरिका जैसे दूसरे देशों में जहां गैम्बलिंग और लीगल है उस पर बहुत रिसर्च हुई है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल ने बताया कि 37 ईयर ओल्ड स्टीवन डेलनी को ऑनलाइन स्पोर्ट्स की लत लग गई, इसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स खो दी। ये प्रॉब्लम इतनी बुरी है कि करीब 2% अमेरिकंस गैम्बलिंग से एडिक्टेड है। पिछले साल तमिलनाडु में एक 39 साल की महिला ने People don't take it seriously. Gambling addiction is a very serious addiction. It is as serious as substance abuse. It should be taken seriously. Gambling, it gives you such a realistic dopamine hit that it tempts you. You actually feel like you know the game. You know what you're doing. You really know that the next number will come six or the next ball there will be a wicket. You genuinely believe so. And that results in basically this entire thing happening. क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनकी सारी सेविंग्स जो उन्होंने अपने बेटे की स्कूल की फीस के लिए जमा करी थी उसको एक ऑनलाइन रमी गेम में खो डाला। एक और इंसिडेंट में हैदराबाद में एक महिला शॉक में पड़ गई जब उनको पता चला कि उनके बैंक अकाउंट से 36 लाख रुपए गायब है। कहाँ गए थे पैसे? उनके बेटे ने गैम्बलिंग ऐप पे लगा दिए। वो बेटा पहले 10,000 रुपए हारा, फिर ये रुपए जीतने के लिए और पैसे लगाए, उनको भी हारा, पर हारते चले गया जब तक उसने 36 लाख रुपए खर्च नहीं करे। स्टडीज ने ये भी They दिखाया see. कि इनकी वजह से That is डिप्रेशन, so एंजाइटी और स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, और इस बिहेवियर की वजह से वो अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में भी बड़े-बड़े रिस्क लेने लग जाते हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। और हमें बस दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए। पहली कि ये वेबसाइट कह रही है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके देश में ये चीज करना लीगल है या फिर नहीं। पर दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि बहुत क्लियर है कि ये सब चीजें इलीगल है, पर इसके बावजूद ये कंपनीज बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट निकाल पा रही है और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में ये एड्स पे कर पा रही है। क्या बताता है ये हमारे सिस्टम के बारे में? अगर वीडियो जरूरी लगा और अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना That ताकि is वो भी सतर्क रहें। unfortunate. People don't know about this. You should watch this video to really understand like the other perspective, the American perspective of gambling, and that needs to be known too because they have legalized gambling for a long time, and that has ripple effect. That has people going absolute shambles, getting into zeros uh, in money. Okay, wait, I did not check the. Oh man, there are so many comments I did not check. बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया बोला दुबा केसरी भाई कमेंट करो स्टे कैप वो रीड कमेंट धोबी promotes जो okay my god man there are so many comments. Have you ever heard about the Stake website? Yeah, Stake is the biggest platform of them all. I opened Stake once in the app stream even like just to show you the user interface. That is not like Stake uses cryptocurrency so that they can offshore the money that way. But yeah, all of them are bad. Watch this video. नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में तेजी से बढ़ी है। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स तक भी अब इन्हें प्रमोट करते हुए दिखते हैं। आईपीएल टीम्स की जर्सीज पर इनकी प्रमोशन होती है, आईपीएल के बीच में इनकी प्रमोशन होती है और सभी प्रमोशंस में मोटे-मोटे तौर पर एक ही चीज बार-बार कही जाती है कि घर बैठे-बैठे कैसे आप हजारों रुपए कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन असलियत में इन ऐप्स का मकसद उल्टा है, आपके पैसे लूटना, आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाना। इस वीडियो में दोस्तों मैं इन ऐप्स का नाम लेकर इनकी बात नहीं करूंगा, नहीं तो कोई ना कोई कॉपीराइट का बहाना देकर वीडियो हटवा देंगे, बल्कि दूसरे तरीके से मैं आपको इनका बिजनेस मॉडल समझाऊंगा। इनका जो ट्रेडिशनल और ओरिजिनल फॉर्म है कसिनोस। कसिनोस कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोगों का पैसा लूटते हैं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। और जैसे जैसे आप समझोगे आपको दिखेगा कि सिमिलर टैक्टिक्स अब आज के दिन ऑनलाइन इन बेटिंग ऐप्स के द्वारा इस्तेमाल करी जा रही है। कसिनो शब्द एक्चुअली में दोस्तों कासा शब्द से आता है जो कि एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है एक घर, एक हाउस। अमेरिकन हिस्ट्री में आप देखोगे तो पुराने जो गैम्बलिंग एस्टैब्लिशमेंट्स होते थे उन्हें सलून्स करके पुकारा जाता था। इन सलून्स में अक्सर ट्रैवलर्स आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, सोशल गैदरिंग होती थी जहां पर खाना पीना होता था और अक्सर एक दूसरे के साथ लोग गैम्बलिंग भी करते थे। ये छोटी मोटी गैम्बलिंग जो सोशल गैदरिंग के समय करी जाती है, ये इंडिया में भी बहुत देखने को मिलती है। तंबूला खेलना हो गया जैसे, ये काफी कल्चर्स का हिस्सा रही है। मोरल ऐसी काफी हार्मलेस और फन चीज रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री। और कसिनोस भी ओरिजिनली इसी पर्पस से बनाए गए थे। आज के दिन इनका नाम जरूर सेम है लेकिन मकसद पूरी तरीके से अलग। अब इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर है और ये तभी होता है जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाया जाए गैम्बलिंग का। क्योंकि किसी भी कसिनो के लिए इनका प्राइमरी इनकम सोर्स है इनके ये गैम्बलिंग गेम्स। बेसिकली तीन जनरल कैटेगरीज होती हैं कसिनो गेम्स की। पहला गेमिंग मशीन्स, दूसरा टेबल गेम्स और तीसरा रैंडम नंबर गेम्स। गेमिंग मशीन्स जैसे कि स्लॉट मशीन्स जिन्हें यूजुअली एक ही प्लेयर के द्वारा खेला जाता है एक टाइम पर। Have you tried any of these apps? I have tried playing Dream 11, but I did it for like free. Like there are games where you can like demo games, so you basically practice for the real games, and they make sure you win the demo game, so you really feel like shit. I could have won a real match if I paid money, and so you start giving money, and that they would take it. It's an obvious business tool. So I have played the demo apps just to have the feel of the user interface, the applications. I'm really tempted by user interfaces of different applications, new products, new platforms.
टाइटैनिक मूवी में भी जैक वन द टिकट जस्ट कसिनो के जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसमें। दूसरे ये जो टेबल गेम्स हैं जैसे कि ब्लैक जैक या क्रैप्स हो that गए, is not इसमें एक से ज्यादा related. प्लेयर्स खेल सकते हैं और अक्सर ये प्लेयर्स हाउस के खिलाफ ही कंपीट कर रहे होते हैं। हाउस यहाँ पर कसिनो खुद है। इन टेबल गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है कसिनो के एम्प्लॉयज के द्वारा, जिन्हें डीलर्स कहा जाता है। और तीसरे ये रैंडम नंबर गेम्स जैसे कि कीनो या बिंगो, जिनमें रैंडम नंबर जनरेट किए जाते हैं या तो कंप्यूटर के द्वारा या फिर किसी एम्प्लॉय के द्वारा। कई कसिनो गेम्स इन तीन कैटेगरीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि रूलेट का गेम है, ये एक टेबल गेम है जिसे डीलर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें रैंडम नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब आप सोचोगे कि इन गेम्स को खेलने का मतलब है कि यहाँ एक लक का गेम चल रहा है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप जीत जाओगे कुछ पैसा। लेकिन चीजों को अगर कसिनो के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी लक का गेम नहीं चल रहा है। गेम चाहे कोई भी खेले, कितना भी खेले, यहाँ गारंटीड है कि जीत हमेशा कसिनो की ही होगी। सारे गेम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में किसी भी एक गेम से कसिनो को गारंटीड प्रॉफिट मिले। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसे हाउस एज कहा जाता है। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है जो बताती है कि चीजें कितनी ज्यादा कसिनो के फेवर में है। यहाँ पर रूलेट गेम का एग्जांपल लेकर देखते हैं। जो अमेरिकन स्टाइल रूलेट है वो बेसिकली एक व्हील होता है जिसमें नंबर्स लगे होते हैं कोनों पे 1 से 36 तक लेकर। आधे नंबर्स रेड कलर में है, आधे ब्लैक कलर में है। आप बेट लगाते हो कि बॉल रेड कलर पे रुकेगी या ब्लैक कलर पे रुकेगी। अगर आपका गेस सही रहा तो आप पैसे जीतेंगे। आपको लगता है कि आपका जीतने का चांस यहाँ पर 50-50 है, लेकिन ऐसा होता तो कसिनो के प्रॉफिट कमाने का चांस 0 होता। अगर 10 लोग आए बेट लगाने, आधे लोगों ने ब्लैक कलर पे बेट लगाई, आधे लोगों ने रेड कलर पे बेट लगाई, कोई ना कोई तो उन पैसों को जीत ही जाएगा। कसिनो को खुद के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। इस व्हील में 2 ग्रीन कलर के जीरोस भी होते हैं। यहाँ नंबर्स की काउंटिंग शुरू होती है, एक तरफ 0 और दूसरी तरफ एक डबल 0। अगर बॉल इन पर रुकी तो जीत यहाँ पर कसिनो की होगी। तो कोई भी प्लेयर चाहे वो रेड चुने या ब्लैक चुने, उनके जीतने का चांस एक्चुअली में है 18/38, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 47.4% होता है। और किसी भी गेम में जो हाउस एज है वो होगी 2/38, जो कि 5.26% है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक कसिनो में किसी एक रूलेट टेबल पर मान लो $1 मिलियन स्पेंड किए जाते हैं लोगों के द्वारा बेट करते हुए 1 महीने के टाइम स्पैन में। तो जो मैनेजमेंट है उस कसिनो की वो एक्सपेक्ट करती है कि वो प्रॉफिट इससे कमाएगी अराउंड $50,000 का, अप्रॉक्सिमेटली 5% ऑफ 1 मिलियन। और रूलेट को तो फिर भी एक ऐसा गेम कंसीडर किया जाता है दोस्तों जहां पर आपके जीतने के चांसेस वन ऑफ द हाईएस्ट है कसिनो में, क्योंकि यहाँ पे हाउस एज काफी कम है। आमतौर पर जो हाउस एज होती है कसिनो की बाकी गेम्स में वो 20% तक 40% तक भी पहुंच जाती है। रूलेट के अलावा ब्लैक जैक, वीडियो पोकर, सिक, वो कुछ ऐसे गेम्स के एग्जांपल है जहां पर हाउस एज काफी कम होता है और माना जाता है कि इन गेम्स में गैम्बलर्स का जीतने का बेस्ट चांस है। लेकिन सबसे खतरनाक वो गेम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी जा सकती है पीछे से, जैसे कि स्लॉट मशीन्स। स्लॉट मशीन का कांसेप्ट बड़ा सिंपल है। ये कुछ ऐसी दिखती है, आप एक बटन प्रेस करते हो या लीवर नीचे करते हो, इसके अंदर ये पहिए हिलते हैं और आपको अलग अलग सिंबल्स दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर एक विनिंग कॉम्बिनेशन आया सिंबल्स का तो आप जीत जाएंगे। विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे कि एक सिंबल 5 बार एक लाइन में आ गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो ये गेम खेलेंगे तो उनका जीतने का एक बड़ा फेयर चांस है यहाँ पर, लेकिन इससे ज्यादा अनफेयर गेम कोई हो नहीं सकता। एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पीछे से क्या करी जा रही है, क्योंकि ये कसिनो के हाथ में है तो उसे जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि वो इस तरीके से प्रोग्राम करें कि इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। आप सोचोगे इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी स्लॉट मशीन को खेलता है वो हमेशा हारने लग जाए, तभी कसिनो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन अगर ऐसा होने लग गया तो कोई दोबारा खेलेगा ही नहीं गेम को। इसलिए दूसरी चीज को भी कंसीडर किया जाता है इनकी प्रोग्रामिंग करते हुए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मशीन का एडिक्ट बनाओ। और एडिक्ट बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत उस खेलने वाले बंदे को जीत लेने दो, लेकिन बस इतना ही उसे जीतने दिया जाए कि वो इसका एडिक्ट बना रहे। प्रॉफिट तो मैक्सिमम हमारे पास ही है। कई साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाना, जो मशीन के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, टाइम ऑन डिवाइस। तो उनका पर्पस है टाइम ऑन डिवाइस को मैक्सिमाइज करना और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना। अब पहला यहाँ पर ये इंश्योर किया जाए लोगों को किसी भी तरीके की इंटरप्शन ना हो खेलते वक्त, ताकि लोग अपने गेम में ही मगन रहे, किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। इसके लिए स्लॉट मशीन्स को बड़ा तेज बनाया जाता है, कुछ ही सेकंड में आपको रिस्पांस पता लग जाता है और मशीन इंस्टेंटली रेडी रहती है दूसरी बार स्पिन होने के लिए। इनफैक्ट एक स्लॉट मशीन 1 घंटे में 500 बार स्पिन कर सकती है। बाकी जो कार्ड्स के गेम होते हैं उनमें अक्सर शफलिंग में टाइम लग जाता है, लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लोगों का फोकस लूज हो सकता है। दूसरा एक परसेप्शन बनाया जाता है कि आप कंट्रोल में हैं, क्योंकि आप उस लीवर को नीचे कर रहे हैं या फिर आप उस बटन को दबा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने यहाँ पर गेम खेला है और जो रिजल्ट आएगा वो आपके एक्शन की वजह से आएगा। इससे कंट्रोल का इल्यूजन आता है। लोगों को वो गेम्स खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है जहाँ पर लोगों को लगता है कि वो कंट्रोल में है चीजों के। तीसरा, जब ये सिंबल्स घूमने बंद होते हैं और रुक जाते हैं, आपको एक्साइटमेंट महसूस होती है, क्योंकि आप देखते हो कि ये तो इस तरीके से अरेंज है कि आप जस्ट जीत गए थे। ये एक सिंबल यहाँ 3 का ऊपर पैटर्न बनने लग रहा है, बस थोड़ा सा और इधर होता तो पूरा जीत जाते। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है आपको एडिक्ट बनाने के लिए। मशीन जानबूझकर इस तरीके से रुकती है कि आपको हमेशा लगे कि आपको बस जस्ट जीतने ही वाले थे, ऑलमोस्ट जीत गए थे। इस फीलिंग की वजह से आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है। आपको लगता है कि कोइंसिडेंस नहीं था, आपकी चीज कंट्रोल में थी, आप जस्ट जीतने वाले थे। तो जो नुकसान हुआ है आप उसे इग्नोर कर देते हैं। 4-5 और ट्राई करते हैं और आपको फिर दिखता है डिंग डिंग डिंग, आप एक्चुअली में जीत गए। आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन हार्मोन फ्लड। Why Dhoni and Kohli promote these games? Brother, they get a lot of money for it. And I feel like some influential people don't know don't realize, don't know, I won't say don't realize the actual implications of what these things have. Like, if you really make sure that Ajay Devgan meets a genuinely poor young kid who has been addicted to gutka and now has cancer and is about to die, if he sees that person one day, I think I believe in humans in such a way that I really am sure that he would never uh, renew the contract that he has, even though how much insane money he has. Maybe a amount of money surpassed would make them convincing again. But yeah, that would leave a mark. And they should realize what they are doing. These are very addictive things that you're selling, and you should not put your face behind it, because you should know what are the implications of this tool that you are promoting as an individual. कर जाता है, आपको बहुत खुशी होती है अंदर से। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। लेकिन ये अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक थी आपको भड़काने के लिए। ये जो आपको जीत दी जा रही है, ये एक छोटी सी जीत है। ओवरऑल अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपए लगाए पिछले गेम्स को हारकर, आप यहाँ 600 जीत गए, आपको लगता है आप जीत गए हो, लेकिन इस चीज को कहा जाता है लॉस डिस्गाइज्ड एज अ विन। यही तरीका है आपको एडिक्ट बनाए रखने के लिए। एक अनप्रेडिक्टेबल तरीके से लोगों को टाइम टू टाइम छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स देते रहो, ताकि लोग वापस आते रहे खेलने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेना है यहाँ पर गैम्बलर्स फैलेसी नाम से। ये बेसिकली एक फीलिंग है जो कुछ लोगों में आती है कि उन्हें लगता है अगर वो इतनी बार एक के बाद एक हारे जा रहे हैं तो नेक्स्ट तो वो जीत ही जाएंगे अगला गेम। आखिर कितनी बार एक बार में हार सकते हैं? फॉर एग्जांपल मान लो आप 10 बार कॉइन टॉस करते हो और 10 की 10 बार टेल्स आ जाता है, तो आपको लगता है कि अगली बार तो हेड्स आएगा ही आएगा। ये तो बहुत अनलाइकली है कि 11 बार टेल्स ही टेल्स आए, लेकिन असलियत में हर कॉइन
टॉस पर चांसेस तो 50-50 ही हैं, जीतने हारने का चांस बदला नहीं है। इस फेमस फैलेसी को मोंटी कार्लो फैलेसी भी कहा जाता है, क्योंकि 18 अगस्त 1913 की बात है, मोंटी कार्लो कसिनो में एक रूलेट का गेम खेला गया था, जिसमें जो बॉल थी वो ब्लैक वाली स्पेस में जाकर गिरी 26 बारी लगातार। जो गैम्बलर्स वहां खेल रहे थे उन्होंने मिलियंस ऑफ फ्रैंक्स अपने खोए, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर 20 बारी 21 बारी ब्लैक आ गया, अब नेक्स्ट वाला तो रेड आएगा ही आएगा, लेकिन वो 26 बार ब्लैक पर गिरी बॉल। अच्छा, अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक सेंसेस से रिलेटेड है। किसी भी कसिनो में आप देखोगे कोई घड़ी नहीं मिलेगी आपको, ना ही कोई खिड़कियां होंगी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई कसिनो ओनर कि आप खिड़की के बाहर देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आपका ध्यान इन गेम्स में ही रहना चाहिए। आप इतने एडिक्ट बन जाओ कि आप टाइम का परसेप्शन ही लूज कर दो। बाहर दिन है रात है क्या पता, घंटों यहाँ पर आपने बिता दिया, आपको रियलाइज नहीं होना चाहिए। वैसे इसी टैक्टिक का बहुत से स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये कोई ओटीटी ऐप पर अगर आप कोई टीवी शो देख रहे होते हो, एपिसोड के खत्म होने के बाद एकदम से लिखा जाता है नेक्स्ट एपिसोड स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1, क्योंकि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते सोचने का कि यार कुछ ज्यादा देर तो नहीं होगी मुझे टीवी देखते हुए, अब मुझे टीवी बंद करके थोड़ा काम करने बैठ जाना चाहिए। नहीं, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो जाएगा आपके क्लिक करने से पहले। यही टिकटॉक जैसी ऐप्स और इंस्टाग्राम रील्स पर भी किया जाता है। एक रील आपने देख ली, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रील आपको दिखा दी जाती है। इनका पर्पस है बिल्कुल आपको एडिक्ट बनाए रखना, थोड़ा सा भी टाइम ना देना सोचने का, क्योंकि अगर आपको 1 2 सेकंड का भी टाइम मिल गया सोचने का, आप शायद ऐप यूज करना उसी वक्त बंद कर दोगे। इसी टैक्टिक को काउंटर करने की एक स्ट्रेटजी मैंने That is such a cheap way of manipulating human behavior. You are creating a tool that would destroy people by itself. So scary. उसमें बताइए, आप भी अपनी आसपास की एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिजाइन करो कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। अपने फोन में सारी नोटिफिकेशन की साउंड्स डिसेबल कर दो, सिर्फ वाइब्रेशन ऑन रखो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। अपने फोन को अपने घर में रखने की एक के लिए मिलती है साइट पे हजारों लोग 40% ऑफ सेंस ऑफ स्मेल का लास वेगास में इस्तेमाल किया जाता है, जो परफ्यूम छिड़का जाता है कसिनोज में। डॉक्टर एलन हिश, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने स्टडी करके पता लगाया कि लास वेगास में एक स्पेशल सेंट जब स्लॉट मशीन एरिया में डाली गई थी, 50% ज्यादा पैसा कमाया कसिनो ने। स्मेल की वजह से गैम्बलर्स का मूड थोड़ा लिफ्ट अप हो गया और वो और ज्यादा समय बिताना चाह रहे थे कसिनो में। आपकी सेंस ऑफ साउंड का भी इस्तेमाल किया जाता है आपको बहकाने के लिए। जो कसिनो में स्लॉट मशीनें आवाजें निकालती हैं वो म्यूजिक के सी नोट में होती है, जिसे यूनिवर्सली प्लेजेंट माना जाता है। इतना ही नहीं, एक एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। जो कलर्स मशीन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो बटन का शेप है, साइज है, इन सबको इस तरीके से चूज किया गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा गैम्बलिंग के एडिक्ट बने। हमेशा आप देखोगे स्लॉट मशीन्स में जबरदस्त गोल्ड कलर इस्तेमाल किया जाता है, रंग बिरंगा कलर। एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि ये तो भाई ट्रेजर है, लोगों को लालच दिया जाता है कि ये इतना सारा खजाना आप जीत सकते हो, आओ आकर खेलो। रॉबर्ट ग्रीन, एक ब्राउन यूनिवर्सिटी के साइकियाट्रिस्ट की स्टडी में पाया कि जो लोग स्लॉट मशीन्स खेलते हैं वो 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से एडिक्टेड बनते हैं गैम्बलिंग के एज कंपेयर टू जो लोग कार्ड्स खेलते हैं। अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली 65 to 80% पैसा जो कसिनो कमाता है वो सिर्फ और सिर्फ स्लॉट मशीन से आता है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल गेम्स की नहीं है, पूरा का पूरा कसिनो ही इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप अंदर आओ और गैम्बलिंग के एडिक्ट बनो। जो लोग पहली बार आते हैं कसिनो में, अक्सर उन्हें फ्री ड्रिंक्स ऑफर करी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा। अक्सर उन्हें कुछ फ्री कॉइंस दिए जाते हैं कि ये $10 ले लो, आप फ्री में खेल सकते हो, $10 से ट्राई करो, जो गेम खेलना है खेलो और सारा पैसा जो आप जीतोगे वो आपका है। लोगों को लगता है कि ये बढ़िया है, मैं कोई पैसा लूज करूंगा नहीं यहाँ पर, तो खेल लेता हूँ। और जब कुछ पैसा जीतने लगते हैं लोग, तब उनके अंदर लालच आता है कि ये तो मैं फ्री पैसे से इतना जीत गया, मतलब मेरे अंदर इतनी स्किल है, मेरे पास इतना गुड लक है कि मैं और जीत सकता हूँ। फिर लोग अपना पैसा लगाते हैं और देखते ही देखते कुछ लोग एडिक्टेड बन जाते हैं। अक्सर एक और जरिया ढूंढना है Yeah, कसिनो this से is पैसा the कमाने का। exact technique I was talking about that Dream 11 also has. It has demo games, and you constantly keep winning the more you play these demo games. And you would feel like shit. If I spend 25 rupees in this game, I would have got 75. That's insane. That's 50 rupees profit by just doing the same thing that I'm doing. You would be convinced by playing just 2 or 3 games that yes, you would be spending money on it because you know how the game goes. But it's manipulation at its finest, brother. They would make sure you play with the players or the bots who are bad enough at the game that you win every time you play a demo game. Sometimes they would make sure you lose so that you feel like, oh, okay, I'm not the best, but yeah, I can do it. कहा कि अपने आप को होटल्स के अंदर बना लो। जब लोग होटल्स में रहने आएंगे तो वो कसिनोज में घूमना चाहेंगे, पैसे लगाना चाहेंगे। दुनिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल कसिनो एक्चुअली में है गैलेक्सी मकाओ। साल 2019 में एनुअल रेवेन्यूज का $8 बिलियन का था। ये Holy कसिनो अपने आप में shit. अलग नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड कसिनो रिजॉर्ट का हिस्सा है। एक ऐसा एरिया जहां पर 3000 से ज्यादा होटल रूम्स, 120 रेस्टोरेंट्स और 200 से ज्यादा लग्जरी रिटेल ब्रांड्स हैं। अब आप शायद सोचोगे कि कसिनोज का इन ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के साथ क्या कंपैरिजन बना। कंपैरिजन है दोस्तों, और बहुत सारा है। यही सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सिमिलर तरीके से अप्लाई करी जा रही हैं। स्लॉट मशीन्स की तरह ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स भी कंप्यूटर प्रोग्राम्ड है, और आप गेस कर सकते हो कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम उन्हीं 2 वेरिएबल्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा होगा, जो प्रॉफिट ऐप से कमाया जा रहा है और जो टाइम लोग स्पेंड कर रहे हैं इन ऐप्स पर। ये अचीव करने के लिए आपका पूरा डिजाइन ही इस तरीके से किया होता है। इन ऐप्स का यूजर इंटरफेस बड़ा ही ब्राइट और एंगेजिंग सा रहता है। विजुअल क्यूज डाले जाते हैं, जब भी आप जीते हो फ्लैशिंग लाइट्स आए या चीयरफुल साउंड्स आए जिससे आपके अंदर खुशी हो। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, इनमें से कई सारी बेटिंग ऐप्स के अंदर खुद का कोई डार्क मोड नहीं होता। जब आप फोन पे अपना डार्क मोड एक्टिवेट करते हो तब भी इनका इंटरफेस व्हाइट और ब्राइट कलर का ही रहता है। शायद सेम लॉजिक कंपेयर किया जा सकता है कसिनो से, जहां पर खिड़कियां नहीं होती। दूसरा, नोटिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, जिससे इंपल्सिव बेटिंग ट्रिगर हो। आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे क्रिकेट गेम्स के या बेट्स जो अक्सर लगाई जा रही है ऐप्स पर, ताकि आपको भी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो, फोमो हो। तीसरा, जैसे कसिनो में फ्री ड्रिंक्स दी जाती है या फ्री बोनस दिया जाता है जब आप पहली बार एंटर करते हो, इन ऐप्स में भी साइन अप बोनसेस होते हैं, फ्री बेट्स होती हैं जब आप पहली बार इन ऐप्स को ज्वाइन करने जाते हो। जिन लोगों ने कभी बेटिंग नहीं करी है उन्हें एक इंसेंटिव मिल जाता है कि मैं भी इस ऐप को यूज करके देखूं, मुझे फ्री पैसा ऑफर किया जा रहा है। चौथा, जैसे स्लॉट मशीन्स में इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है लीवर्स और बटन्स के जरिए, यहां पर एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है बहुत सारा डेटा और टूल्स आपको प्रोवाइड करके। ये देखो, आप जो गेम खेल रहे हो यहाँ पर वो एक गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ लक नहीं है। आप चाहे तो ये सारा डेटा एनालाइज कर सकते हो इन क्रिकेट मैचेस का। आप अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो ये एनालाइज करने के लिए कि कौन सी टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, अपने जीतने के चांसेस बढ़ा सकते हो। ये सब एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल आपको दे रहा है। आपको लगता है आपके पास ताकत है ये डिसाइड करने की कि आप जीत पाओगे या नहीं जीत पाओगे। ये बात सच है कि कुछ हद तक जरूर स्किल इन्वॉल्व है यहाँ पर, लेकिन मोर और लेस ये फिर भी एक लक का ही गेम है। और लक से भी ज्यादा एक प्री प्रोग्राम्ड गेम है। ये पीछे का प्रोग्राम बैक एंड पर क्या चल रहा है आप नहीं जानते, और कितने तरीकों से यहाँ पर हाउस That is एज को so मैक्सिमाइज true. करने की कोशिश That is so true. That is a word. Everything, every probability can be uh, like for you. Like it can be like when you play a real game, the probability is tangible. Like there, if you play a slot machine, the probability of you getting the slot machine victory is 1 out of maybe 25. But it's virtual. It does not exist. It can make up the next move entirely, and you would think it's natural. So it would make sure like
the probability is 1 in 500. Basically, making sure you get money when they want you to get the money, so that you stay hooked enough so that you spend more money in it. That the algorithm is not actually based on the game that you're playing, more into the addictiveness of the game. That how to make sure this person plays the next move, spends the more money. How much money should I give at this very moment so that that person really spends more money into it? That is the true thing. की जा रही है आप नहीं जानते कैसे आपको नियर विंस और लॉस डिस्गाइज एज विंस देके मैनिपुलेट किया जा रहा है आप शायद नहीं पहचान पाओगे ढेर सारी बैटिंग एप्स हैं इन सारी एप्स पे अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं और हर गेम में अलग अलग तरीकों से यही ट्रिक्स लगाई जाती हैं एक और तरीका है लोगों को सोशल वैलिडेशन देना इन सारी बैटिंग एप्स पे आपको अक्सर लीडर बोर्ड्स मिलेंगे ये देखो ये जो बंदा है ये टॉप पर है इसने अभी तक सबसे ज्यादा बारी जीता है इसको इतने सारे पॉइंट्स मिल पाए हैं आप अभी रैंक नंबर इस पर हो आप भी ऊपर आ सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो दिखाने के लिए कि देखो आपने कितनी बड़ी विनिंग बैट लगाई इससे एक सेंस ऑफ कंपटीशन आता है और जो वैलिडेशन आपको इससे मिलता है उससे आप इनकरेज रहते हो कि आप इस गैम्बलिंग को कंटिन्यू करते रहो तो इवन दो मैं इन एप्स के नाम नहीं ले सकता लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है आप खुद ही ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि किस किस तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अलग अलग बैटिंग एप्स आप पर लगा रही हैं आपको लूटने के लिए और आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाने के लिए एक चीज याद रखिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं बिना वैल्यू एक्सचेंज के पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है पैसा एक वैल्यू एक्सचेंज का तरीका है आपको पैसा तभी मिल सकता है जब आप कोई वैल्यू दे दूसरे को या तो अपने काम के फॉर्म में अपनी स्किल्स के फॉर्म में अपनी नॉलेज के फॉर्म में या फिर किसी भी और तरीके से वैल्यू दी जाए अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि घर बैठे बैठे पैसा अपने आप फ्लो करने लग जाएगा बिना इस वैल्यू एक्सचेंज के तो भूल जाइए आप कुछ 1 in a million लोग होते हैं जो लॉटरी जीत जाते हैं बिना कुछ करे लेकिन वो लोग भी कोई ज्यादा खुश नहीं होते अपनी जिंदगी में न्यूज़ आर्टिकल सर्च करके देखिए ऑनलाइन लॉटरी विनर्स हु लॉस्ट इट ऑल इतनी कहानियां मिलेंगी आपको जो लोग बिना कुछ किए लॉटरी जीत जाते हैं वो उतनी जल्दी उस पैसे को गवा भी देते हैं क्योंकि वो Yeah, it's statistically shown that like more than 60% of the people who won a lottery went bankrupt in like a span of 10-15 years. So if you even have wealth, but you have no knowledge how to manage it, you will lose it instantaneously because how fluid this amount of money is. No, no amount of money will be enough if you just start spending it like chump change. पैसे की असली कीमत रियलाइज नहीं कर पाते मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये पसंद आया तो यहां क्लिक करके और बिजनेस मॉडल के वीडियोस देख सकते हैं बहुत बहुत That's धन्यवाद great. That's cool. When we watch another video, 35, you can watch another video. This is how easy it is to book your flight tickets now. But have you ever wondered what goes on behind the scenes? We travel This to is a video about Make My Trip. So this is showing that how Make My Trip operates. It's the biggest travel company in India. So let's just look into it. Let's get a dive into the company. It's a company that has been there since the internet, dawn of internet in India. Make My Trip, Book My Show. They have a lot of big entities now. Make My Trip's office, which is right across our campus in Gurgaon. Here we got a chance to interact with the CEO, CTO, CTO, and other top leaders who are shaping the future of travel. For a fancy word, you can say we are the super app for travel. Make My Trip isn't just a travel booking platform. It is a tech powerhouse with over 80 million lifetime transacted customers. Everyone who thinks of booking travel, at least they will go to the Make My Trip site or they will have an app installed on their phone. Make My Trip is India's most underrated success story. It is a company that took long, hard route to get where it is today, and What is this? Can you see? it's a company that took long, hard route to get Launch of Make My Trip, IPO on Nasdaq, mobile app, merger with iBevo. Oh, iBevo and Make My Trip merged. I did not know that. Recovery and growth. Okay. where it is today, and it did by Post playing in a market COVID-19, that was okay. stacked against. But did they get here? That is nice animation, brother. Back in 2000, we launched in India, but we realized that India wasn't ready because the digital ecosystem did not really exist. But come September 2005, or let's say around 2006, market started opening up. And that transition was super exciting because when we relaunched in India, we took off like nobody's business. Obviously, the technology was not necessarily had scaled up as much, and the website would crash and, we would be inundated with volumes and we had paper tickets, right? So, in the evening, all of us would be busy sort of sending paper tickets to the consumers and so on. So it was crazy. Holy hell, they would make sure they are mailing tickets away. Now I'm talking And about not very mailing specifically- like online email, physical mail. your question. I think every of our product intervention starts with a problem statement, right? And that problem statement at times is something discovered by us. And I was sharing with you the strategy that we follow, getting very close to the consumer or the supplier or any of our partners just to understand how things are. And that problem statement is generally very hazy, right? For example, the problem statement would be as hazy as that suddenly there is a lot of pilgrimage travel, right? Now, this is just an observation. It's not even a problem statement. Now, the next step is that can we go a little deeper? That what does that mean for our business or for the entire ecosystem, right? And then we start building hypothesis. And that hypothesis is mostly around the fact whether this hypothesis, what we are thinking, and the solution that we are sort of going to propose, they're marrying with each other or not. Right? Okay. Oh, Once that is such a we nice have that, way of thinking. Like a fact and what is the fact's observation
And what would be a fruition of that as a product? To think about that before really setting offshore. It's, I think, a very rudimentary thing, but it's an interesting way to put it. It's a very amazing way to put it. That fair idea, okay, this is we are thinking in the right direction. Then we start bringing the design team, the technology team, the marketing team. Then we create either prototypes or end consumer deliverables. Yeah, then we do post assessment, then how things are fared, and then we move on to the next. If you can shed some light on how Make My Trip has taken consumer feedback and created or developed product features. I think one which we are very proud of, how we came back and travel came back after COVID. I think we observed two big changes in the consumer behavior. Consumers were looking for flexibility like never before because COVID brought that thing that anything can happen at any point of time. I think as a group, we started thinking a lot more about that. How do we bring flexibility to the core? And that's when we started building products like Book at Zero. There is no lock-in from your side. You have made your hotel booking completely at zero cost and you're paying in the last moment. Second product we built in accommodation was another trend that we observed just after COVID. People started traveling for properties rather than a city. Right? They don't seek that I have to do a lot of sightseeing and have to visit a particular city. People are going for a specific hotel or a property or an experience probably. And that experience could mean accommodation coming into play. And this is where we build a product around staycations. We have the travel intent of most Indian consumers who travel. We can help you find the relevant products in the shortest duration of time. So we have done a lot of hyper personalization for at each and every stage in the product experience. We know exactly what stage you are in the journey. If you are coming before the trip, we will ask you to, why don't you check in because you haven't checked in and yet the check-in window is now open. If you are in trip, I know that you have left home just a few hours ahead of the flight, you will need a cab. I will send you that reminder that you need a cab. We can pre-book it for you. At the airport when you land, I know that the flight has landed. Okay, that is just here and you'll get Everyone in the team to follow it. Theory called use case theory. So this use case theory suggests that every consumer, when they're planning their travel, they have a very specific need and an objective. When you're a group of friends traveling to a leisure destination, then you're full focus on fun. Can I enter or exit any point of time? The check-in should be very facilities inside the property. yeah, I get it. Travel What the is the reviews on a week now. Let's workflow? not These are just not driving the flexing about the conversation and features. This is ad work. every month there's a new model that comes out and a new bunch of capabilities with Gen AI itself. Don't think that you know everything or you will know everything. Come out with this mindset that I'll have to keep learning as I evolve and I grow because there will be no growth without learning, continuous learning anymore. All right. This is a nice video. Okay. We would do something else now. For the next 20 minutes, we would do. Actually, this wallpaper is very creepy to me. This is not comfortable to my eyes for some reason. What's happening? What is this? Okay, we will do this. This is a nice one. That is such a nice one. Yeah, that is more pleasing to the eye. We would do Steam. Oh my god. We would play this for just 15 minutes and then we would end the stream and yeah, pretty much it. So whatever progress or deep progress, whatever we do is a verdict. Okay. Okay, no, I can't sing those. I really want to listen to this song. Okay, well, fine. I can't. Not a bad song. Okay, I'm poor, I'm bald, I'll get to work. Fine, happy. Let me win this level now. I'm playing this for too long now. It's been a total net hour spent in this game trying to figure out this level. So listen, More the than company enough. believes that not only should you dress for the job you want, but you should do the job you want before you get the job you want. Basically, you're working Saturdays from now on. What? Holy heck, that is. Okay, we did it. We did this. That is nice. Yep. And I completely lost the flow of the game. Oh! Oh my god. I completely lost over. I should be keeping quiet. Wait. I should be. Yeah.
Oh, I started so bad. You are so close. Just keep pushing through the pain, lack of social life, declining health, and all the other things falling apart in your life. The manager's pay raise will be worth it. Wow, that's good. That's cool. I won't make it. Ah, shit. Here we go again. Yeah, man, I failed at this as well now. That's just bad day. Get to work is so sad for me now. Yeah, I did it for this time. You see? Just sit here, just let it roll, take the momentum and flat off. Yeah, easy. God. Oh my god. Holy heck. Yeah. Yeah. That's not difficult. I never am able to climb this. Okay, that's not an issue. That is not. Oh, holy heck. Okay. Oh my god, this is too scary sometimes. I have to slow down. This is a very abrupt curve here. Yeah. God. The game खेल रहा. Yes, brother. Yes. Okay. Oh my god. Oh, I somehow did it. I did it. Oh my god, I'm so lucky. I just got lucky here. Okay, I have to just fly and grab it. Okay, I'll just take a flight. Oh no! Just think, once you get that raise, you can invest it all into crypto and quadruple your savings. Guaranteed. I have to start all over again. What is the time? Okay, we still have time. Man, we still have time. Okay, we'll start it again. We'll start it again. Okay, let's be quiet. This is serious stuff, guys. Oh, okay. Yeah, now we'll just take a flight, go up there, do the grab, fly here. Oh, I was so close this time. That is so unfortunate. Okay, whatever. Oh God. Oh hell no. Okay, that's still better. Where does it leave me? Okay. I have to be here then. Is a crypto investment 100% safe? Is rollerblading safe? Some things are worth the risk, and risk is your middle name. No, I'm not this my middle name. No, I know, man. That's so sad. Oh, I won't be able to do it. Oh shit, I'm stuck now. It's so difficult. I won't be able to. Okay, wait. Actually, I might. Oh, there's a way to reach here. I have to do it in one momentum, or else I won't be able to climb. Oh God! Every time I'm missing this now. Now I am stuck at this stupid thing. Oh, okay. Let's go here. Let's go easy. Oh my. Of course, man. Such a bad luck. Why don't I just fall at the start over again? Never mind. This game is built like this, brother. One mistake and you're like basically at the beginning all over again.
Yeah, stay here. Yay, leap of faith. Oh, that was close. Oh. What's wrong with this one? Why can't I do this was the one thing I was able to do every single time. It's such an easy one. Why can't I do this one? Let's take it. Let's go. Yeah, take the flight. Oh, I mean, nailed this. Nailed it this time. Perfect coffin. Yeah, let's go. Climb up. Take the flight. Whoop, we're back here. Okay. Oh, this was not a chance. Okay, fine. We'll go down again. Yeah. Let's not screw this time. Oh, oh! I was about to screw this up. Oh! What was that? That was so sad. Okay, okay, okay. This is the important for us. Just grab it. Fly. Grab. Take this. Fly. Oh my god. Sometimes I'm just very good at it. Sometimes I'm so unlucky. And sometimes I'm just plain bad. Okay, let's go. Next. This time. Okay. Go! Arey bhai! Why wouldn't it go? Oh, go, 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 huh? Is hard on the body. Okay, still. I'm not far. I'm just here. That's fine. That's still fine. That's still way fine than what I had. That is still way fine. Could have been far worse. Could have been a nightmare. Oh, pause. Fingers. Oh my god, again this. Oh, this is so. I was doing this so good. Now I'm so bad at it all of a sudden. Yeah. Back here. Square one. This flight is the scariest flight. It says Paris. It's so close to me. Yet it's so far. It's insane how I am committed to this game after so much misery. This time I'll get it. Easy. Easy. Holy heck. Let me pause it. I have an itch. Wait. I can't screw this up now. I can't screw this up now. Oh, yes. Okay, fine. Wait. This is difficult. I remember this. I have to make sure I get banged. Oh, yes. I got banged in this wall. If I fell, I fell down. Oh, that is. Oh, man. We are here again. Whew, boy. That is a difficult one. We are here. We are back here. Yeah. So if I go there, I have warehouse manager and street unpaid internship. This is such a small. I can't afford to touch these things. These things really go like. These things act like boomerangs. So you basically. Oh. Okay. Holy heck. Imagine falling from here.
Oh, why did I say that? Oh my God, I have to start this again. Why would I say something like that? Oh my God. Yeah, die, man, die. This is no place to live. Okay, 7 minutes. You can do it. You can recoup that loss. This is what gambling feels like. This is exactly what gambling feels like. It gives you the high, immediately it collapses you. You feel shit, and you immediately are like, no, I have to recoup this exact investment right on time so that I make sure that I'm doing good. I was so close, I was so damn close. What happened again? You better not. Oh, no, I'm done with this game. I'm done with this game for now. Bye, everyone. I hope you had a nice day. I hope you had a good stream, and a good dream. Okay, yeah, fine. See you next time. Bye.